नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नोबल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, डिफ्यूजन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड हाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द states of matters. Now today the topic is what is the common unit and SI unit of temperature and what is the relationship between degree Celsius and Kelvin scale. Latent heat and types of latent heat. Now first of all we will first temperature. The common unit of temperature, the common unit of temperature is degree Celsius and the SI unit of temperature is Kelvin. And the relationship between Kelvin and degree Celsius is that Kelvin is equal to degree Celsius plus में 273. Now the question is convert the temperature 25 degrees Celsius in a Kelvin scale. Now here we can say that Kelvin is equal to degree Celsius plus में 273 and now the degree Celsius temperature is given 25 degrees Celsius. Now Kelvin is equal to 25 273. Now that is equal to 298 and latent heat. What is latent heat? Now first of all the meaning of latent is hidden. Latent means क्या होता है? Hidden. और latent heat क्या होती है? Latent heat वो heat होती है जो किसी भी मैटर की states को क्या कर देती है? Change कर देती है without change its temperature. Heat, the heat energy which has to be supplied to change the states of substance. States of substance is called latent heat. Due to latent heat, there is no rise in temperature. And due to this there is
no effect, there is no effect in kinetic energy। मीन्स जो लेटेंट हीट है वो एनर्जी है जो किसी भी मैटर या सब्सटेंस को सप्लाई की जाती है उसकी स्टेट्स को चेंज करने के लिए। जहाँ लेटेंट हीट में वो लेटेंट हीट है, अगर हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मैटर की स्टेट्स को चेंज करने के लिए, तो वहाँ ना तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर आप थर्मामीटर वगैरह से उसके टेम्परेचर को अगर मेजर करना चाहोगे तो वहाँ हमें क्या दिखाई देगा कि ना तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ना ही वो उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, लेकिन फिर भी क्या कर देता है उसके स्टेट्स, मैटर की स्टेट्स को चेंज कर देता है। होता क्या है हमारे पास, जैसे कोई भी सब्सटेंस है अगर वो सॉलिड के अंदर है तो सॉलिड से उसको किस में चेंज आना होगा, लिक्विड के अंदर चेंज होना होगा। तो जो सॉलिड सब्सटेंस है उस सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन जब लिक्विड स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो होता क्या है कि जो लेटेंट हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो उसके टेम्परेचर को और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाए बिना जो सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करती है, ताकि जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां से ब्रेक हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली किस में चेंज हो जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करना है तो लिक्विड के बीच में कुछ ना कुछ इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो लेटेंट हीट है वो क्या करेगी, उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगी, उसको ब्रेक करके वो किस में चेंज कर देगी, उसको गैसियस स्टेट में चेंज कर देगी। लेकिन जब वो ब्रेक करती है उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको चेंज करने के लिए उसमें ना तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस हीट को जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती, क्योंकि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ यूज हो जाती है, उस बॉन्ड को तोड़ने में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ उसे तोड़ने में यूज हो जाती है। इसलिए किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करते समय लेट हीट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड काइनेटिक energy। Now there are two types of latent heat. First is latent heat of fusion and latent heat of vaporization। Latent heat of fusion and second is latent heat of vaporization। Latent heat of vaporization। Now first latent heat of fusion। Latent heat of fusion। Latent heat of fusion, latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of solid to liquid without any
without any change in temperature, without any change in temperature. This called latent heat of fusion. Means जो latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules. यानी कि जो latent heat है एक solid की वो क्या है, is the quantity of heat, वो quantity है heat की किसके अंदर, joules के अंदर, required to, जिसकी जरूरत है टू कन्वर्ट, बदलने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जूल के अंदर जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. Latent heat of latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization of a liquid, of a liquid is the quantity, is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of liquid to gas without any change in temperature, without any change in temperature. सिर्फ हमने जो फ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, मैटर की स्टेट किस में चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड में. लेकिन जो वेपराइजेशन होता है उसमें क्या होता है, वेपराइजेशन किसका होता है, लिक्विड स्टेट्स का, और किस में चेंज होती है, वो गैसियस स्टेट्स में. नाउ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज द quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of liquid to gas without any change in temperature is known as latent heat of vaporization. Latent heat of fusion and latent heat of वेपराइजेशन, इसे थोड़ा सा समझिए. हमने कहा कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसमें मैटर की जो सॉलिड स्टेट्स है, मैटर की 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो जो मैटर की सॉलिड स्टेट्स है उससे 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट जूल्स के अंदर हमें रिक्वायर्ड होती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम किसी मैटर के स्टेट्स यानी कि जब हम उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों नहीं होती. तो क्या होता है कि इसका why the kinetic energy of a solid is does not change when a latent heat is supplied to it. Now the answer of this question is the solids are very close to each other. Due to this there is a force of attraction is very strong, and due to force of attraction is strong, so when latent heat is supplied in a solid, then it break only force of attraction between the solid particles. Due to this the solid particles becomes far apart from one to another. Due to this the states of matter is changed from solid to liquid without any change in kinetic. कि जो solid particles होते हैं वो एक दूसरे के मतलब जो particles हैं उनके बीच में space नहीं होता, वो
मतलब अपने बहुत ही पास पास होते हैं, और पास पास होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो लेटेंट हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी किस में यूज हो जाती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यूज कर ली जाती है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। एंड नाउ द क्वेश्चन इज नेक्स्ट, why temperature of boiling water, why temperature of boiling water does not rise, does not rise even through heat is being given continuously. The question is that जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता जब हम उसमें जो हीट है वो लगातार क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। Why? Now the answer, boiling water is a liquid boil, and the particles of water attract one another with a certain force, when we supplied latent heat it overcome the force of attraction between liquids particle, so they become totally free and change in gaseous states. Now the answer of this क्वेश्चन, आई होप आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।